in theatre house, we are sources research work. We are a nature surrounding place. This nature can help to do the work, and silence is important. মারিয়া বাহির হইয়া দেখো রে তোমার নৌকা খেলে আইলো রে তোমার ডিঙ্গাই আইলো রে জোর বৈঠা বওয়া পার করো সাইলন বাতি ডিঙ্গা নাও ভরিয়া তোমার ডিঙ্গাই আইলো রে তোমার ডিঙ্গাই আইলো রে জোর বৈঠা বওয়া পার করো সাইলন বাতি ডিঙ্গা নাও ভরিয়া তোমার ডিঙ্গাই আইলো রে. So I focus mainly on the woman song or the love song also. I try to relate, and this is more for me like to understand the labor situation. For me, I more connected with the women and how they feel about their love relationship. This is more, I think I can more connect. So I focus as a like subject or genre. If you ask, then I prefer that side. But the other things are always there. Also, silence and nature is to help to found your own work. শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণি বায়ে জল তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায় জল তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায়. ये गाना याद आया. ये गाना हम पहली बार गाने के हिसाब से सीखे थे. तो जैसे मेरे फादर ने मेरा मतलब हमने सीखना शुरू किया 3.5-4 साल की उम्र में. तो एक क्लासिकल मास्टर आता था, तो वो हमको क्लासिकल राग ये सब सिखाने लगे. सो इन वन पॉइंट लाइक आई गेट लिटिल bored or pissed off, so I force him to teach me some songs. So this is kind of a children's song, you can say, Bangla song. So yeah, this is one memory from childhood. Yeah, then I started to like learn classical, and it goes for so long. In between there is sometimes some music, some songs, some bhajans are coming, but it's like a special dish. But most of the time like you are in a tough training. And then slowly it's changed. Like after my school I choose music as a like subject, because during the school time or from the childhood I got so much appreciation from my teachers, my surroundings, that I can do it, I understand. So I'm happy to do, because I'm happy that I got to know that people like it, and it makes me like give me the energy to go to choose music as my special preference, you can say. So I like leave the academical part, like study in that way. So I go into the higher study, I choose music as a subject. So there also I choose in the beginning like Bengali songs and classical also. Then in college some friends of mine and then the other people started to say suddenly that when I sing folk it sounds more like nice in my texture. I used to get pissed off in the beginning because I don't know much about folk and baul songs in that time, because I grew up in a different background, and this classical music is, I understand, I know, I know the modern Bengali songs and that style.
but folk is not close to me even. I'm so far away from this. So I started to figure it out when some other like close friend and who I admire, they also started to say that I can try this kind of genre, and luckily some people show me this kind of musics are there, what kind of like music inside the village area or से कुछ किस्म का गाना जैसे है उन लोगों का स्ट्रगल, उन लोगों की लाइफस्टाइल के ऊपर। जैसे उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि कुछ कुछ जैसे लेबर लोगों को एक डाउन बंगाल एरिया से माउंटेन एरिया में जाना पड़ा, क्योंकि बंगाल हैव लाइक देयर इज़ down and then you can find mountain here, so they have both different culture, different area. Say they go, they think that they will get more money, but when they reach there they are stuck into that situation. So still they like try to tell their woman that there is some chance to like go out of it, like, and like out of this situation, and someday we will like go somewhere and it will change. And they feel that when they are in down Bengal, they feel that okay, when we will go up, the economy will change, then I will give you this and do this, but then it's not happening, and then they like complaining that what actually happening. And that one song I remembered that. So it's like kind of a travel song that they are going. रेलगाड़ी कैसा न सुंदर, रेलगाड़ी कैसा न सुंदर, ভিতরে তো আগ পানি, উপরে তো লোহালতি, ভিতরে তো আগ পানি, উপরে তো লোহালতি, হাওয়া के समान चले লাগে নধর শাম, চলো দেখে যাবো রেলগাড়ি कैसा न सुंदर। जैसे वो अपने पार्टनर को बोला चलो देख के आते हैं रेलगाड़ी कितना सुंदर है, और वो जो रेलगाड़ी जब चलता है तो वो शाम के जैसा दिखता है, जैसे शाम का जो आड़ा टेढ़ा चाल के बारे में लोग बात करते हैं, तो वो बोल रहा है कि उसको विजुअली ऐसा दिख रहा है कि जैसे उसमें उसका पूरा एक्सपेक्टेशन, पूरा जो वो ज़िंदगी के बारे में वो जो फ्रेम सेट करना चाहते हैं, वो थ्रू देयर म्यूज़िक इट्स कमिंग। और देयर इज़ ऑल्सो so much things about, like they talk about their crises, they talk about when the ज़मीन सूख जाता है, खेती नहीं होता, तो कैसे वो लोग एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे जाता है, और कैसे कैसे उन लोगों का गाने का लिरिक्स इसके थ्रू बदलता जाता है। Work with different person, the different master, different person singing, classical singer, baul singer. So slowly I decide that there is this folk, in a folk genre I prefer, like I got to know that there is some songs from coming from the labor, from the worker, from the like woman, household woman, like what they are, how they feel in their life, their long time, what is happening with women, what is their social, political situation, that they sing through like their regular life singing. So suddenly I have this information and I started to look forward, and then I found that there is so much variety of folk music which I can more connect with the people. জলের ঘাটে দেখাইলাম কি সুন্দর শ্যামরাই, জলের ঘাটে দেখাইলাম কি সুন্দর শ্যামরাই, শ্যামরায়
ভ্রমরায় ঘুইরা ঘুইরা মধু খায় শ্যামরায়, ভ্রমরায় ঘুইরা ঘুইরা মধু খায়, জলের ঘাটে দেই খাইলাম কি সুন্দর শ্যামরাই, জলের ঘাটে দেই খাইলাম কি सुंदर श्यामराई। ये गाना जैसे पानी भरने जाने का गाना है। शादी के टाइम पे लोग जब मतलब सुबह पानी भरने जाने का एक रिचुअल है, सो वुमेन गैदर ऑन दैट टाइम एंड दे feel that now it's claimed like that this is a ritual, but I feel these songs carry kind of meaning. It's an extramarital affair they are talking about. So they see someone in the, when they went to take the water and they fall in love with the person and they came back and talk about it. So this is a one kind of style. It's Bangladesh. It's called Sylhet area in Bangladesh, and it's called Dhamail song. So slowly I come to this baul music. एक्चुअली कम मतलब कि हम जैसे देखने लगे उसको, जो वो कैसा है उसका, जो उन लोगों के साथ मिलने घुलने लगे, उनका जो लाइफस्टाइल है, कैसे ये गाना आता है। तो जैसे यहाँ पे एक बाउल लोग बॉडी प्रैक्टिस और अपना लाइफस्टाइल, अपना फिलोसफी और सोशल सब कुछ जैसे राधा कृष्ण की स्टोरी के थ्रू ही उसको डिस्क्राइब करते करते जाते हैं। तो देयर इज़ अ spiritual perspective also. So they have different lifestyle, different practice, which is difficult for me to get into it. And when it came to here in West Bengal, it's also changed. There is a kind of, usually here I meet some Muslim women and they also sing in, they also have some shadi wala songs. So they sing in a little different and more different rhythm, जैसे कि एक चाँद ओठे गौरव करे रे সঙ্গে নিয়ে ওঠে তারায়, আমরা বিনি সুতোয় গেঁথেছি ফুলের মালায়, আমরা বিনি সুতোয় গেঁথেছি ফুলের माला। जैसे यहाँ का रिदम थोड़ा बदल जाता है और ये लोग जैसे इस गाने में बात कर रहे हैं वही सेम चीज़ इधर बोल रहे हैं कि सूता नहीं है फिर भी एक माला गांठ लिया हमने। तो वैसे वही वाला बात जो वो मतलब लव है पर वो एग्जिस्टेंस नहीं है उस पर्सन का, पर फिर भी वो फ्लो कर रहा है उसके अंदर। और जो सोशल सिचुएशन, जो सोशल प्रेशर रहता है एक औरत उस टाइम पे जब ये गाना बनाया गया और सारे लिखा गया, हर एक लड़की वही वुमन ही लिखे हुए हैं ये सारे गाने। तो वो सर्कमस्टेंस में उस टाइम पे कैसे वो लोग इसको ऐसे एज ए फ़न ले लिया अपनी लाइफ में कि इसको चलो इसको एंजॉय करते हैं, तो इसके थ्रू किस लिखते हैं और इस एंजॉयमेंट में एक पेन भी है सो वो अपना जो एंगर है, जो दुख है, उसको ऐसे ही कहीं पे नहीं पास कर रहे हैं। वो थ्रू देयर आर्ट, इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द आर्ट एग्जैक्टली ऑल्सो, बट दे कीप singing and they release their everything, their pain or their love or their happiness, their joy. So they enjoy, I feel, in a one way. They are not so they are not depressed. They are like they are struggling and they have the power to struggle, and they somehow achieve this that time that they bring their music to the other people as a story of their life, their struggle. So it's a kind of political step also, and which is like very happily and casually done. It's not like so much rebel into it. It's just organically. I think they feel it's their art. They have to do this.
So they do. So it's become very normal, very natural. Rather than the spiritual, which I have to achieve also personally, that's a different practice. and these folk things, I feel that this is also there. Also, I have to achieve something else. And all with them to found your something individual things. This is your own nature should work. This is more natural and organic for me, that I can go to the people and talk to them, understand that what is the social reality from old age and now, and I can also connect that nothing changed in a, mostly if I talk about the women who sing, so not there is a change in outside that I can understand. I am really different from them. If you talk about modern or education and these kind of things, but in between there is a very slow, same structural domination, social domination is happening. Dhammail have different kind of genre. It's also have some Bichedi Dhammail means, Bichedi means when he was like, Biched means separation. So when they are having this separation and they are like, there is a song called like মিছাই লোকের কথা গো ননদি, মিছাই লোকের কথা, যদি কানুর সনে প্রীতি করি, শপথি তোমার মাথা, যদি কানুর সনে প্রীতি করি, शपथी तोमार माथा। जैसे इस गाने, ये थोड़ा सैड सिचुएशन है कि जैसे वो बोल रही है कि उस एक्चुअली में कुछ अफेयर जैसे हुआ ही नहीं कुछ, पर फिर भी लोग उसको ब्लेम कर रहा है. सो दिस अनदर स्टाइल लाइक, बट दे शी इज़ अ सिचुएशन व्हेन दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, बट शी इज़ लाइक सेइंग दैट देखो अरे सब अभी भी बोल रहे हैं और हम कुछ कर भी नहीं रहे इसके साथ, मतलब इज़ जस्ट आई एम इनटू द लव बट आई एम नॉट डूइंग लाइक नॉट हैविंग द अफेयर एक्चुअली. It's a different kind of song that in North Bengal side लोग हाथी लेके, जो माहूत होते हैं तो वो हाथी लेके एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, वो जंगल में हाथी लेके जाते हैं. तो जैसे वहाँ का गांव के जो लड़कियां हैं उनसे वो लोग अपनी काम के लिए, कुछ काम के लिए अगर जंगल गए तो वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उन लोगों का एक रिश्ता भी बनता है. फिर ये माहूत अपने काम के लिए उधर से मतलब उसका काम हो जाता है, वो हाथी को लेके किसी दूसरे जगह उसको जाना पड़ेगा उसके काम के हिसाब से. तो वो उस टाइम के हिसाब से भी कुछ लड़कियों का गाना है, जैसे माहूत का गाना बोला जाता है सब गाने को. जैसे एक गाना তোমরা গেলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে, ও তোমরা গেলে কি আসিবেন মোর মাহুত বন্ধুরে. जैसे ऐसी माहुत में ऐसा और হস্তির কন্যা, হস্তির কন্যা বামনের নারী, মাথায় নিয়াতাম কলসিও, সখী হস্তে সোনার ঝাড়ি সখিও, ও মোর হায় হস্তির কন্যা রে, খানি কো দয়া নাই माहू तक लागिया रे. ये जैसे ये जो माहूत है वो इस लड़की को बोल रहा है कि तुम मतलब कभी कभी आते हो कभी नहीं भी आते हो, पूरा तुमको ज़रा भी दया भी नहीं है. और उल्टा वो लड़की भी इस गाने के एंड में बोल रहे हैं कि कभी मतलब तुम जब जाते हो तो तुमको नहीं पता कि क्या इधर क्या चलता है. मतलब ये थोड़ा ऐसा, तो थोड़ा धीरे धीरे इस गाने में उसका लिरिकली ऐसा हो जाता है. तो
जैसे इन सब चीज़ों के बारे में और लड़कियों के लाइफस्टाइल के बारे में, उन लोगों का कैसे डाउरी देना और लड़कों के घर से डाउरी लेना और उन लोगों को इसी वजह से किसी बूढ़े आदमी से शादी करना पड़ा, तो इसके हिसाब से कुछ गाना भी चलता रहता है, मतलब बहुत सारा सिचुएशन. So I feel like I'm a like searcher in that way in this genre. How much I can, I go, I talk to them. There is some very few people still leave that from that culture, that kind of style of work. If I go to the labor song also, that kind of migration is not valid in this situation now, but there is something still happening in a same structure. And if we found our nature should work, it can be simple. It can be communicate different kind of person, different, they have different language. Is work is touching something is very important for us. And also important, if you found something, you have to continue, you have to refine it. The essence of art, or like the how people have this urge to sing with their pain, with their crisis. Now I feel nowadays we are like so much entertained by so many things, so that's why that kind of things are not coming organically from people. So this now it become very institutional. The folk turn into like get into institution. So if now like I can take 5 students and I can teach, but it's like a kind of I adopted things which I am doing. So I need to go to then some old one and bring him or her here to teach, but that's also not the thing that what they feel and how they sing. It's still there is a big difference. So this is kind of the things I try to figure out that I can like introduce recent like my generation or that also me, that what is the valid it's still there, that we should look and like don't get like so entertained by the like the time we are having or facing on. We need to go more deeper, and how much I understand if me or my kind of other people, how much we go to these places, these people, and I have some how much information, then maybe we more like understand that what we have to do with the folk culture in nowadays. Happy song I try to remember. This is because all like very heavy and yeah, it's also not Bengal song. Boitha maro re, o baisar bhaiya re, zhariya boitha mariya jao re, zhariya boitha mariya jao re. O torun boitha maro re, o baisar bhaiya re, zhariya boitha mariya jao re. O tor নৌকার নাম বাতাসি রে, নৌকা চলে বাতাসে রে, ঝাড়িয়া বৈঠা মারিয়া যাও রে। ও তোর ডিঙ্গায় আইলো রে, জোর বৈঠা বওয়া, পার করো সাইলন বাতি, ডিঙ্গা নাও ভরিয়া তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে। সাল বাতি ধরিয়া মারিয়ায়, ও মারিয়া বাহির হইয়া দেখো
রে তোমার নৌকা খেলে আইলো রে তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে জোর বৈঠা বওয়া পার করো সাইলন বাতি ডিঙ্গা নাও ভরিয়া তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে জোর বৈঠা বওয়া পার করো সাইলন বাতি ডিঙ্গা নাও ভরিয়া তোমার ডিঙ্গায় আইলো রে। And don't give up. If it is some difficult situation, if it is some crisis period, don't give it. Continue, try to continue different way.